हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट का और लॉ एंट्रेंसेस की तैयारी का ये नया चैनल। ठीक है, तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हेलो खुशी, वेलकम वेलकम एक बार फिर ये पॉइंट और ये सेशन टू टेल यू कि अब से लेकर आपका क्लैट का पेपर जब तक है उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, सो दैट यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम optimally, so that once you appear for the paper this year in December for 2023 admissions, you should come out with flying colors. That is the main objective and agenda for this particular session today. Now, once you know that CLAT as a paper is something which is reading based and there is a lot of reading that is required, therefore it becomes absolutely very important for you to understand the nitty-gritties of this particular paper. And also you should be aware that reading plays a major role for this particular paper. So we know about that what are the eligibility criteria. There is no upper age limit for UG program in CLAT 2022 as regards minimum percentage. So these are those things that is required for you to take this particular paper. But when you talk about the structure of the paper has 150 questions, and 150 questions you get 1 mark for every correct answer and deduction of 0.25 for every wrong answer. So there is a negative marking also which you need to take care of and you have to remember. Alright, the weightage of subject areas is like this, that English you have around 28 to 32 questions. For current affairs you have 35 to 39 questions. Then legal reasoning you again have 35 to 39 questions. Logical reasoning you have 28 to 32 questions, and quantitative techniques you have 13 to 17 questions. This is what your entire structure of the paper is. It is advisable, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए बात को, that when you are taking a paper or you're preparing for the paper, you should know that paper in and out. So once you know the ground that you are aiming for, then only you can go and conquer it. That's why it is important for you to understand the paper. Now, once we have understood the paper and we know that what are the kind of topics and sections are there in this paper, then we see that try and read some of the same sources that the question setters are using. Now, for example, when you know that in English, the entire section is divided into reading comprehension. Therefore, the first thing that comes to our mind is that we need to pay focus on reading. Okay, and that is very important. That's why try and read some of the same sources that the question setters are using to create questions. इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए you first of all have to analyze. You need to analyze previous year papers. ठीक है? And once you analyze these papers, you will see that these papers and these passages in English comprehension, you see that these passages come from different sources. Okay, if you see a pattern in previous year papers where the questions or the sources are common or they are repeating, so you should try and read those sources as more as possible. Once you do that, you come to know about the type of questions the paper setter does. You do not have to read the entire book if the source is a book, but keeping the track of sources like newspapers, magazines would be very helpful. In particular, read the opinion and editorial sections of newspaper, as many passages are derived from such sources. This has been added advantage that will help your preparation in current affairs also and general knowledge also. Now this is वो हिंदी में बोलता है ना, एक पन दो काज. अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे आपको current affairs में भी help मिलेगा. Then having a study group or someone, even 1 or 2 people, so अगर आप देखते हैं तो 1 से 2 लोग अगर आप साथ में पढ़ते हैं तो then you come to know at different sources as well as different conclusions of the same passage also, कि भैया देखो इसको इस तरीके से पढ़ो, इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ो.
with whom you can discuss various passages would be very helpful. Once you and your study partner read the same passage, try and form questions. This is very important. अगर आपने इतने passages पढ़ लिए that you reach to that particular position where you are able to set the questions. ठीक है, अगर आप खुद ही क्वेश्चंस बनाने लग गए और उस लेवल तक पहुंच गए कि अब आप क्वेश्चंस बना सकते हो, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी वेरी इजी फॉर यू. एंड लेट मी टेल यू, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल ऑल्सो हेल्प यू. इट विल ऑल्सो हेल्प यू इफ यू गो हियर एंड रीड दिस. ठीक है, सो इट विल हेल्प यू इन लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो. ठीक है, ग्रामर कहां से प्रैक्टिस करें? ग्रामर प्रैक्टिस फ्रॉम एनी गुड 10th स्टैंडर्ड ग्रामर टेक्स्ट बुक. सम क्लास 6 लाइक रेनन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन आर स्टिल वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन. सो ये एक वो बुक है जो आप रेफर कर सकते हैं, रेनन मार्टिन, फॉर योर ग्रामर. It may not be possible to develop your vocabulary too much in the days left before the exam, but for vocabulary, if every day you take a target of 5 new words, ठीक है, just imagine by the time you will take CLAT in 2022 December, you will have a good vocabulary bank for these paper. ठीक है. Then newspaper, definitely textbook, these all will help you. जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें या कुछ टेक्स्ट पढ़ें, उसके साथ साथ कीप अ डिक्शनरी हैंडी विद यू. डिक्शनरी का आप कौन सी रख सकते हैं? आप कैम्ब्रिज को रेफर कर सकते हो, आप ऑक्सफोर्ड रेफर कर सकते हो, आप मरियम वेबस्टर यूज कर सकते हो. ये सारी की सारी वो डिक्शनरीज हैं जो आप ले सकते हो जिनकी पढ़ने में. ठीक है. Make sure you go through all the practice material and sample papers provided by CLAT consortium. ये CLAT के उस पर काफी सारे practice papers and sample papers मिलते हैं. So make sure that you do them. These are closest in style and level of difficulty to what you may see in the eventual paper. जो actual paper आएगा उसी से मिलते जुलते ये होते हैं. तो CLAT की जो वेबसाइट है वहां से सैंपल पेपर आप करना शुरू करें. इसी तरीके से on Adda app also you will be getting questions and the type of questions that we will be doing in our paid classes also, that also would be somewhat similar to the actual paper of CLAT. So उसके लिए हमारे पेड जो क्लासेस हैं जो शुरू होने वाली हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लैट के लिए, उससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें आप. ठीक है, और उसके लिए कोड लगाएं Y468 स्मॉल s, Y468 स्मॉल s टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर इट. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लीगल रीजनिंग के लिए. अब लीगल रीजनिंग जैसे मैंने आपको बताया था, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज sections of the UG are somewhat related. क्यों related हैं ये? क्यों related हैं उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं. ठीक है. तो अगर आप क्वेश्चन देखें in English section you will get the questions like central theme of the passage. You will get questions on tone of the passage. You will get the questions on vocabulary. ठीक है. You will get questions on inference based question, factual question, title of the passage. These are those questions that you will see in English section. Similarly, when you will go to your LR section, you will see which of the following strengthens the argument, weaken the argument, which of the following is a logical conclusion of the passage. Now all these things are overlapping from your reading comprehension only. Therefore we reach to a place where we see that reading comprehension is really very important, not only for English section but also for LR and legal aptitude also, because there are certain similar questions that they ask you. Therefore what I'll suggest you is that maintain this strategy, that read a newspaper for 30 minutes daily, newspaper. ठीक है. Then 5 words on daily basis. ठीक है. This newspaper will also help you with current affairs. So do around 30 minutes of current affairs again daily. Then do 2 RC passage
2 RC passage on daily basis. On daily basis, you should do this. Today we are standing in July. So July, August, September, October, November, right? So you have 5 months. In these 5 months, try to read at least 5 novels. Try to read at least 5 novels so that it gives you that particular understanding to read the text fast. Okay, you should work on your speed reading. You should work on your speed reading, and this is what your objective should be for preparing for a paper like CLAT, and this is what your objective should be. So अगर आप ये चीजें तरीके से कर रहे हो, and if you're doing it on regular basis, then trust me, आपका जो तैयारी है for CLAT should be on top notch. ठीक है? Any questions? Any questions? Any questions? Khushi, any question that you have? Right, so this is how you need to maintain the time balance. ठीक है? अब आप बोलते हो कि भाई हम बोर्ड्स के साथ कैसे कैसे पढ़ाई करेंगे एंड ऑल दैट, तो मैंने आपको एक टाइम लिख के दिया है. 5 वर्ड्स ऑन डेली बेसिस करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आपको 30 minutes of reading newspaper is a habit that you can make for yourself, isn't it? So these are the things that you have to keep in your mind before you start and step into preparation for CLAT. ठीक है? उसके साथ साथ ही if you work on say learning the tables, if you work on learning the reciprocals, cube roots, this will help you in calculation. बिकॉज अगर आप इसमें देखें जो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करते हो, यू कैन सेव टाइम. यू कैन सेव टाइम. जैसे परसेंटेज निकालनी है आपको, एंड यू नो दैट व्हाट इज 1/14, 1/7, राइट, 1 से 21, 1/20, or whatever, XYZ thing. If you know these reciprocals, then definitely you will see that your speed of solving these questions of data interpretation will definitely increase. That's why it is important for you to learn the tables. ठीक है? Then it is important for you learn the cube roots, square roots, all that. सर जिनका 12th नहीं है उनके लिए भी प्लीज. हाँ, तो जिनके लिए 12th नहीं है बेटा, देन तो आप ये बिल्कुल और आराम से कर सकते हो. तब तो मैं कहूंगा आप 5 नॉवेल्स की जगह पे यू शुड टारगेट 10 नॉवेल्स एटलीस्ट. ठीक है? आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़ के उनसे क्वेश्चंस डिराइव करने की कोशिश करें. राइट? इट इज ऑल अबाउट, इफ आई से, एंड आई मे नॉट बी एग्जैजरेटिंग, दैट इफ योर इंग्लिश इज गुड और इनहांस्ड, देन डेफिनेटली योर chances to clear the paper of CLAT will increase. Okay, this would increase, right? So that is what you are supposed to do as far as your preparation is concerned. So मैथिली, अगर आप अभी से ये सब चीजें करते हो जहां पे you are working on enhancing the speed of reading comprehension, then definitely you have a strong chance to clear the paper and get that dream college of yours for CLAT, right? So that is what you can do. All right, मैथिली, that is what you can do. So ये चीजें हैं जो आप कर सकते हो. उसके अलावा हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो आप कर सकते हो. ठीक है? जो आप CLAT के लिए हमारा 2023 के लिए जो बैच है वो जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम आपको कोशिश करेंगे ये सारी चीजें दें. करंट अफेयर्स, जीके जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इन सब का मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल पे भी. और ठीक है, on the app also you can use the code Y468S for maximum discount. plus अगर आप रेगुलरिटी हमारे चैनल पे आते रहेंगे तो आपको देखेंगे कि निकिता मैम, कुमार आकाश सर और मैं भी आपको अलग अलग चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्लियर CLAT. अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे. अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे फटाफट से, इफ यू हैव सम अदर क्वेश्चन. Right, so with this we come to the end of today's session. ये strategy अगर आप अपने आके चलते हैं, आपको मैंने बताया कि legal reasoning, logical reasoning के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसी कैसी आप बुक्स हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं. ठीक है? Sample questions and model papers provided by CLAT consortium would be of course helpful. Analyze, जो भी आप मॉक या प्रैक्टिस मटेरियल दें उसको एनालिसिस करना बिल्कुल ना भूलें.
But again, I would say it is all about reading, reading and reading, because your maximum paper is based on this reading thing only. ठीक है. So with these words, I close this particular session today. Thank you so much for watching it and all the very best. जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पे और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए. Thank you so much. Bye bye.